alveoli, and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning. Okay. सो बेटा एक साइड पे हम लिखेंगे alveoli एंड एक साइड पे हम लिखेंगे नेफ्रॉन. नेफ्रॉन किडनी में है एंड alveoli जो है वो हमारा कहाँ पर है? लंग्स में है. सो नंबर वन, ये कहाँ पे है? ये लंग्स में है, इन द लंग्स. ठीक है, ये कहाँ पे है? किडनीज. ओके. सो बेटा हम जस्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक एल्वियोलाई का. सो एल्वियोलाई जो होते हैं ना वो बलून स्ट्रक्चर्स के होते हैं. आप जस्ट कुछ ऐसा ड्रॉ कर लो. सो ये हमारे एल्वियोलाई एंड इनके पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं. rather we make it here. Okay, and this is our nephron. Nephron का structure it is Bowman's capsule, PCT, loop of Falley, BCT. After that it is collecting duct. Okay, and जहाँ पे हमारा पड़ा है glomerulus and जहाँ पे हमारा पड़ा है वेना कावा. ओके. सो आप इतना स्ट्रक्चर बनाइए एंड इसे लेबल कर लीजिए. इट इज आवर Bowman's capsule. It is our PCT. It is our loop of Henle. It is our BCT. It is our CD. And it is our vasa recta. It is our alveoli. And it is our blood vessels. ठीक है बेटा. So let's just write about its structure functions now. Number one, the alveoli are functional unit of respiratory system. काम क्या है इनका? बेसिक फंडा क्या है? काम क्या है बेसिकली इनका? दे डिफ्यूजन करवाते हैं. डिफ्यूजन ऑफ gases between body and atmosphere. ठीक है ना? So removes deoxygenated, that is carbon dioxide, out of body. ठीक है ना? So removes carbon dioxide out of body. Okay, this is basic funda of our alveoli. Now what is the function of nephron? It is functional unit of excretory system. इसका काम क्या है? इसका काम है यूरिन फॉर्मेशन and removes nitrogenous waste. For example, urea, uric acid out from body. ठीक है बेटा. So this is all about structure and